Welcome again in the next video of fourth module, which is public finance and taxation. And we have so far done with 3 modules, and we had completed the first video of the fourth module. And today we are going to start off with the second video of fourth module, which is public finance and taxation. In the first video, if you quickly recall, we had studied the structure of the government. I had told you it's very important to understand the structure of the government very briefly, to comprehend, to understand the taxation structure or public finance and issues related to the taxation. So it was important, and we had discussed briefly discussed the structure of the government in the first video. Today this video is related to the structure of taxation with reference to Pakistan, that what is the structure of taxation in Pakistan, what are the institutions involved, and what are the procedures. So today's video is nominated to understand the structure of taxation. So this is starting with the institutions or different levels of taxation structure, or different you can say tiers of the government involved in taxation, basic structure of taxation. First one is the legislative, second one is executive, and third one is judiciary. So these 3 different levels of institutions are involved in building up the taxation structure in case of Pakistan. First one is legislative. What is legislative? What do you mean by the legislation? Legislation is done in the parliament. Different acts and ordinances with reference to the taxes are approved and presented in the parliament in different time periods in Pakistan. So जो legislation है वो basically law है, basically approval है from the parliament जो different type के taxes हैं. Suppose income tax act of 1922, income tax ordinance of 1979, फिर एक income tax ordinance 2001 में आया, sales tax 1990 का act है, फेडरल एक्साइज एक्ट है 2005 का. तो ये सारा कुछ जो डिफरेंट एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, ये लेजिस्लेशन कहलाती है या लेजिस्लेटिव लेवल है, एंड इट इज़ डन इन द पार्लियामेंट. Next is executive. These are executives are the tax authorities involved in taxation. Executives or tax authorities are to administer the taxes which are implemented, and their basic task is to check the efficiency and effectiveness of those taxes. And there are again different hierarchy of management or executives. For suppose finance minister, finance secretary, then there is an institution in Pakistan that is Federal Board of Revenue. So all these tax authorities are used to administer the procedure of taxation and check its effectiveness and implementation. And these tasks are attained through hiring subordinates. They used to make rules, they used to have different types of notifications, they use different medias to get taxes and to administer the taxation in structure and taxation in the Pakistan. Judiciary. The basic role or the basic job is to interpret the laws of taxation and to ensure their implementation. And its members are appointed by the federal government. So these are the 3 different levels or 3 different institutions involved in the basic structure of taxation in Pakistan. First one is legislative, then executives, tax authorities, and then judiciary to interpret the laws and to ensure the law implementation of those laws of taxation. So as I mentioned in the first video, that there was a big change after the 18th Amendment and NFC awards in the basic structure of the government. Same applies to the structure of the taxation.
Prior to the 18th Amendment, what was the situation? Federal government used to collect taxes and duties as per federal legislative list, which we had discussed in the first video. And what was the objective or the task of the provincial government? Provincial government used to delegate some of their legislative functions to the local governments. What the local governments do? Local governments collected residual taxes, which we had discussed in the first video कि residual taxes क्या होते हैं. तो local government का काम था residual taxes वो collect करना जो कि provincial government नहीं कर सकती है. और फिर provincial government ने क्या करना है? Provincial government used to collect taxes that the federal government did not collect. So this was the situation prior to the 18th Amendment in the taxation structure of Pakistan. So according prior to 18th Amendment, there was 1973 Constitution as a basic guide. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बेसिकली इंचार्ज है या रिस्पॉन्सिबल है कि जो रेवेन्यू पोटेंशियल टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट करे. ऑल्दो 18th अमेंडमेंट के बाद इस बेसिक स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंज जो है वो हमें नज़र आता है. बिसाइड टैक्सेशन देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एज वेल. सो दिस स्लाइड लिस्टेड डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट और different receipts of the government. One is taxation. First and foremost, taxation is the basic source of revenue for every government, same as with the Pakistan. Then there are net profits and revenues from the commercial departments of the government. Then interest on loans, that is by the federal government. लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट ने की हैं उसके ऊपर कोई अर्निंग है तो वो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस हैं या उनके जो रिसीट्स हैं दैट इज़ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. दैन सर चार्जेज ऑन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो डिफरेंट टाइप के सर चार्जेज होते हैं. एंड द dividends earned by the government from different government departments. So these are the basic revenue sources of the government. And in same case in the Pakistan, फेडरल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो दो तरह की होती हैं. दैट इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप सबको ऑलरेडी पता होगा. कुछ टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं, कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं. और फिर अगर टैक्स रेवेन्यूज़ की बात करें या टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिक टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. Again, very basic information which you all must be well familiar with, कि जो दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्सेस आते हैं? दैट इज़ इनकम टैक्स, बेसिक डायरेक्ट टैक्स, दैन कैपिटल वैल्यू टैक्स, वर्कर्स वेलफेयर टैक्स एंड अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल. एंड देयर कम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसमें सबसे पहले सेल्स टैक्स आ जाता है, दैन कस्टम एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़. तो ये जो है बेसिक एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस की और इनडायरेक्ट टैक्सेस की. अब वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, दैट इज़ स्टेट बैंक्स प्रॉफिट, जो जैसे हमने पहले जिक्र किया कि जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं उनकी अर्निंग है या प्रॉफिट्स हैं. देन डिविडेंड्स फ्रॉम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज़ द गवर्नमेंट एंटिटी. प्रॉफिट फ्रॉम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, अगेन द गवर्नमेंट एंटिटी. गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ के जो प्रॉफिट्स हैं या उनके डिविडेंड्स हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है हमारे गवर्नमेंट का. देन नॉन टैक्स रेवेन्यू अगेन इज़ फ्रॉम द PSO. तो इसमें जो बेसिक सोर्स है पाकिस्तान में दैट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेज़ हैं उनकी अर्निंग्स. और इसके अलावा जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी रिसीट्स भी हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती हैं. तो 18th अमेंडमेंट से पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का पाकिस्तान में, तो वो 90 से 93% जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट किए जाते थे फेडरल लेवल पे. और प्रोविंशियल लेवल पे टैक्सेशन या प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स कलेक्शन इज़ ओनली 7% फ्रॉम दिस 100% टैक्स कलेक्शन. तो ये 18th अमेंडमेंट की इससे पहले का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन था कि जो मोस्टली यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड एज वेल कि ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे कलेक्ट नहीं हो रहे बल्कि वो फेडरल लेवल पे कलेक्ट हो रहे हैं. और प्रोविंशियल लेवल पे बहुत ही छोटा पोर्शन टैक्स का कलेक्ट हो रहा है, दैट इज़ ओनली 7%.
By this we have done with the second video which is related to the structure of taxation. इसको मैंने बहुत briefly discuss किया है structure of taxation को, just to quickly move to the issues of taxation. तो आप लोगों को अगर इसके ऊपर comprehensive understanding further चाहिए, go to your textbook or recommended book, read through from the book, get your PPTs beside, तो इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें. एक टैक्सेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने बिल्डअप कर लिया, वो हमने डिस्कस कर लिया कि पाकिस्तान में 3 डिफरेंट लेवल्स हैं और उसके बाद बेसिक टैक्सेस कौन कौन से हैं, और 18th अमेंडमेंट से पहले की क्या सिचुएशन थी और 18th अमेंडमेंट के बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में चेंज आया है, दैट इज़ सेम विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टैक्सेशन. जैसे अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में तो हमने डिस्कस किया था कि 18th अमेंडमेंट के बाद NFC अवार्ड्स के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मज़ीद स्ट्रेंथन किया गया है रिगार्डिंग टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन एंड अदर मैटर्स, एंड रिगार्डिंग द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वो चेंज जो है हमें स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन में भी नज़र आएगा. विल डिस्कस द इशूज़ एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू पब्लिक फाइनेंस इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन.